Hello, Polite family, and welcome to our talk show on World Mental Health Day. So, 10th October every year is celebrated as the World Mental Health Day to create awareness and mobilize efforts to support mental health. So, the theme for World Mental Health Day in 2023 is Mental Health in an Unequal World. So, mental health challenges, as we all know, are growing concerns in India, and more than 15% of the Indian population is getting affected by it by various means, such as depression, anxiety, for example, substance abuse, etc. So, and gender and age are also very, very important factors when it comes to mental health. So, mental health issues, they don't come by age or by gender, but we have seen that they are seen more prevalent in women as compared to men. So, because the trends show that women are more likely to experience mental health concerns such as depression and anxiety. The reason being a lot of societal pressure, hormonal changes, and a range of other factors. Apart from these, the data suggests that young adults are also and young people are also very much affected by these conditions because of academic stress, peer pressure, and also a lot of social media influence. So, then it is a very, very important topic and a very alarming situation at a public health level. So, for this, we have invited Miss Punita Chatwani for today's talk show. And Punita is a renowned mental health expert who has assisted numerous individuals in addressing their mental health concerns. So, over the 8 years of experience, she is an internationally certified NLP master trainer and emotional intelligence coach, and also she has trained 200 global organizations with their training for the training purposes. So, let's hear about the impact of mental health challenges on individuals and society. A warm welcome to you, Punita. Thank you so much, Shweta, and thank you so much for the wonderful introduction. So, Punita, let's begin by, what is your personal experience with mental health challenges and how did you overcome them? Okay, so Shweta, it might be surprising to you and the people who are listening to me, especially who know that I do work in this area, but I myself has faced a lot of mental issues, I would say, since my childhood. So there is a stigma all around in this world, wherein people say that kids don't get into mental health challenges. But trust me, it's not true because I have been a victim myself, wherein I experienced mental health issues since my childhood, especially because of the environment that I was in while growing up as a teenager, and even after that when I was into my college. So if I get into the specifics of it, I have been into situations wherein I used to overthink a lot because a lot of things were happening around me, and because of that overthinking, it was reached to such an extent, such a level wherein I felt like my life is finished and I have nothing left, right? And this is not just once, but I faced it like multiple times in phases. And there were times when I had nobody to talk to about it, because that time even I was not aware what is this term mental health. See, these days, at least we are talking about it. At least there is a bit of awareness. But if I talk about the days during my childhood, there was not at all any awareness about it. And a big credit for this situation goes to our education system as well. I'm not blaming or I'm not cribbing about it, but that's a reality. If you look into our education system, nobody talks about mental health. There is not even a single subject that talks about managing our emotions. There is not even a single subject that talks about managing stress, depression, anxiety, and all those things. Whenever we are into situation जहाँ पे our body is hurt, कभी कभी हमें लग जाती है, बॉडी में कुछ हो जाता है, तो कैसे हमारे पेरेंट्स हमें भाग के डॉक्टर के पास लेके जाते हैं या भाग के एकदम हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, वो कुछ लग गई है. बट नोबडी सेज कि जब हमें हमारे ओवर थिंकिंग या थॉट्स या एंजाइटी परेशान कर रही है, तो बोला जाता है, ओ ये तो कुछ नहीं है, लेट टाइम पास एंड इट वुड बी फाइन.
यू वुड बी फाइन। तो उसके अराउंड कोई बात ही नहीं करता है, एंड दिस इज सो सरप्राइजिंग। सो बीइंग अ चाइल्ड, yes, I witnessed all these things in my life. And if I tell you how I was able to overcome it, so I think as I grew, I learned it hard way, क्योंकि और कोई तरीका नहीं था उस टाइम मेरे पास में, एंड आई लर्नड इट हार्ड वे, वेयर इन आई हैड टू मेक माई सेल्फ वाइज इनफ टू आइडेंटिफाई माई ओन इमोशंस। मैं कैसे अपने इमोशंस को फिगर आउट करूं और कैसे उनको मैनेज करने में खुद को हेल्प करूं। एंड आई विश कि अगर ऐसा कोई होता उस टाइम पे जो मुझे बता पाता कि ओके दिस इज व्हाई इट इज हैपनिंग और इसका तरीका क्या है मैनेज करने का, तो आई थिंक वो सिंपलेस्ट वे में हो सकता था, ना कि इतना हार्ड वे में लर्न करके। Still, I think this is something that happened for a reason, and I feel fortunate enough कि ऐसा हुआ so that I could get into this domain and see कि अच्छा it's not only me. I mean there are so many people around me जो मुझे पता भी नहीं होता है. So yeah, I mean my knowledge, my wisdom around this area, mental health awareness, managing emotions, taking care of myself, इन सारी चीजों ने मुझे help किया to overcome my mental health issues. एग्जैक्टली पुनीता, हम लोग काफी बार मतलब 10-13 years बैक व्हेन आई वाज इन कॉलेज ऐसा तो कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं था। मतलब अगर आपको इफ यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड और एंग्शियस अबाउट समथिंग, किड्स आर टोल्ड कि मतलब ये कॉन्सेप्ट ही अभी आया है। और Right. ऑल्सो पेरेंट्स वर ऑल्सो नॉट ब्लेमिंग एनीवन, बट देन नेग्लेक्ट था बहुत ज्यादा, एंड पीपल यूज टू थिंक लाइक ये कोई साइकियाट्रिक प्रॉब्लम है। सो आई थिंक जस्ट लाइक योर ओवरऑल हेल्थ, मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। ऑल्सो अगर आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन देखोगे कि हेल्थ का क्या डेफिनेशन है, सो इट इज लाइक मेंटल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ एंड योर ओवरऑल वेलबींग, योर ओवरऑल इमोशनल स्टेबिलिटी। अगर ये तीनों चारों कंपोनेंट्स एक साथ, if we like if they are working properly, then you're good to go. तो ये Right. सब चीजों को पहले काफी नेग्लेक्ट किया गया। डेफिनेटली अग्री विथ यू। ऑल्सो हम लोग बच्चों की फीलिंग्स को कई बार ओवरलुक कर देते हैं कि नहीं यार ठीक है चलो बच्चा है, तो वो नाउ अवेयरनेस इज गेटिंग मोर एंड मोर। एजुकेशन सिस्टम के बारे में जैसे कि आपने बात किया, तो सो आई हैव लिव्ड इन यूरोप फॉर 4 years, बट द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एंड इन यूरोप इज कंप्लीटली डिफरेंट। पहले वो लोग सिखाते हैं हाउ टू बी काइंड एंड हाउ टू बी सोशल, कि आपके बच्चे का अगर सोशल सर्कल नहीं है तो वो सबसे बड़ा उनके लिए कॉज ऑफ कंसर्न होता है, ना कि Right. आपका बच्चा एकेडमिक्स में कैसा है। सो ऑफ कोर्स इंडिया इज चेंजिंग, वी आर ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस in terms of in all the areas, right? In technology, be it technology or other sectors or education also, everything is changing, but I think it will take time and we have a long way to go, that we stop pressurizing our kids and also look at how they're feeling about it, right? Right. So Punita, my next question is, what inspired you to become an advocate for this, like mental health awareness? What was your motivation for this? So I think Shweta, it's been a journey. ऐसा एक दिन में नहीं हुआ था, to be very honest. It just happened because एक तो मेरे खुद के experiences थे that every time when I feel like I'm struggling and I'm like मैं कहाँ जाऊँ? What should I do? Because if I was talking to my friends, they were not in that state, because जैसे ही मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर करती थी वो अपनी 10 प्रॉब्लम्स आके मेरे साथ शेयर कर देते थे, एंड आई वाज ऑलवेज अ पर्सन इन द ग्रुप हु वाज asked to solve the problems. ये ऐसा हमेशा से था मेरे साथ में, स्कूल में भी था, कॉलेज में भी था। एंड when it came to my problems, I was like अगर मैं एक प्रॉब्लम बोलूंगी ना यहाँ से 10 आ जाने वाली है। So I used to isolate myself, and keeping myself in isolation made me lonely a lot of times, especially during college and after that also when I started working as a trainer. So जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, I was not directly into NLP. I started working as a soft skills trainer initially, and later on धीरे धीरे slowly I moved towards psychology and I moved into emotional intelligence, neuro linguistic programming. So to be very honest, जो first time मैंने अपने लिए कुछ की चीज की wherein I was taking care of my mental health was NLP. So जब मैं NLP का कोर्स करने गई थी, I still remember for the first time, मैं ये देख के नहीं करने गई थी that this would make me a coach, और मैं लाइफ कोच बन के आई वुड बी हेल्पिंग पीपल। मैं सिर्फ खुद के लिए करने गई थी, एंड इट वाज अ मेजर ब्रेक थ्रू फॉर मी जब मुझे पहली बार रियलाइज हुआ कि ये जो हम छोटी छोटी चीजों पे पैनिक कर जाते हैं ना, या फिर कभी कभी हमें लगता है कि यार लाइफ खत्म हो गई है,
So it is happening because मैं खुद को मैनेज नहीं कर पा रही हूँ. It is not about the outside environment. It's not about the people. It's about me. And वहां पे for the first time I realized कि अच्छा मैं खुद को मैनेज कर सकती हूँ. And I learned all the techniques. और उसमें से जो first technique थी ना वो ये थी that I have to accept myself. And I have to say this to myself कि it is okay. है ना, इसमें कोई बहुत बड़ा स्टिग्मा नहीं है. इट्स नॉट समथिंग दैट इज गोइंग टू मेक मी फील वीक. नहीं, इट इज ओके टू एक्सेप्ट. इट इज ओके टू इवन आस्क फॉर हेल्प. एंड देन व्हेन आई went through all the interventions and all the therapies on myself, I realized, oh, ये तो easy था. मैं जबरदस्ती इसको इतना बड़ा कर करके उसको ऐसे सिचुएशन में खुद को ले गई थी जहां पे मुझे लग रहा था देयर इज नोबडी टू हेल्प मी. बट ऐसा नहीं है. So when this happened to myself, तो realization वहां पे आया, I think for the first time, कि क्यों ना मैं ये दूसरों के साथ भी शेयर करूं. If I was able to make my life easy and better just by taking care of my mental health, तो क्यों ना मैं दूसरों के साथ भी सेम चीज करूं. And that's when I first finished my studies towards LP, because moving into this domain requires you to have good knowledge and wisdom about therapies and about counselings and coachings. So I had to finish that study of mine, which I did, and then I started working with people, chahe wo koi bhi age group ho, whether it's kids or whether it's adults. I have had clients who are like just 7, 8 years of age, and I have had clients who are like in their 90s. So I So think age, gender, it doesn't matter. you have yourself experienced it, and that is something which has made you more better in managing these people and situations. So, what are like so common misconceptions about mental health that you would like to address? Okay. सबसे important जो है ना वो ये है that when people say that somebody is having mental health issues, they look at that person as if the person is weak. इनको लगता है ये person अगर इसको कुछ mental health issues है ना तो ये weak है. और सिर्फ वीक ही नहीं है, इससे ना थोड़ा दूर रहो, इससे बच के रहो, क्योंकि हो सकता है ये वायलेंट हो जाए कभी भी. हो सकता है ये सुसाइड कमिट कर ले, या फिर हो सकता है कि ये हमारी बात ना सुने एंड घर से भाग जाए. And with parents who think all these things about their kids, I will not blame the kids. I would definitely blame the parents and the adults around them. And not only with kids, I think with every age group ये छोटे छोटे misconceptions जो है ना, इसकी वजह से अगर मैं वीक फील कर रही हूँ ना, बीइंग अ पर्सन हु इज फेसिंग सम मेंटल हेल्थ इश्यूज, मैं किसी को बता नहीं पाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगेगा कि ये सामने वाला पर्सन तो मुझे पागल समझेगा, मुझे समझेगा. एंड मेंटल हेल्थ इन itself is considered as such a big stigma in, especially in our country, I would talk about, जहां पे ऐसा लगता है कि अच्छा तो पागल है. I'll share a small instance with you. I was at my gym, and for the first time my gym trainer asked me ऐसी casually कि what do you do. So I was explaining my work to him that I'm a trainer and I'm a coach. He said, अच्छा तो आप पागलों को ठीक करते हो. Trust me, this is ये what तो he did. बहुत ही मतलब I don't think so you should ever address a depressed or anxious person with the word पागल or psycho or something. You know, like And because लोग इस चीज की सेंसिटिविटी को समझते नहीं है, स्पेशली इंडिया में. आई हैव सीन एंड आई हैव नोन सम डॉक्टर्स आल्सो कि जिनके क्लिनिक में जो उनके असिस्टेंट है दे विल मतलब वो ऐसा कंसिडर करते हैं कि ये पागल है, क्योंकि मतलब देयर इज लैक ऑफ अवेयरनेस. कैन यू इमेजिन कि एक साइकियाट्रिस्ट के क्लिनिक में जो बंदा काम कर रहा है उसी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है. So we have a long way to go and make people aware about what is the actual situation. I myself have, read about it a lot, and I think that this is something which is a very sensitive topic. And जैसे कि आपको वायरल होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, so you should also go to a therapist when your mental health is not fit. So I think we have a long way to go, and to break these myths and to make society more aware of what is happening around exactly. right. And like you rightly mentioned कि जो अगर हम किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, उनके असिस्टेंट को भी कई बार क्लियर नहीं होती है चीजें. So similar thing happened with me. I was at an airport. I was traveling somewhere, and मैं कॉफी शॉप पे बैठी थी, wherein somebody, a person
who looked very knowledgeable, and just I'm judging the book by its cover, but still looked very knowledgeable, and he was moving around and looking for a place. तो मैंने कहा कि अंकल आप प्लीज यहाँ पे बैठ जाए, because I was sitting alone, so I had place around me. So then he asked me, what do you do? And I told him that, I'm a trainer, I'm a therapist, I'm a coach. And he was surprised. And then I asked him, what do you do? Because वो curiousness देखी मुझे उनके face पे. He said, I'm a surgeon, and a very well-known surgeon when he told me about himself. I said, okay, that's great. And then he said कि मैंने तो कभी नहीं सुना ऐसी कोई therapies भी होती हैं wherein you talk to people and you're helping them come out of stress. And it was very surprising and shocking for me, because being a doctor, when somebody is saying this, that means literally you mentioned there's a long way to go. कि हमारे यहाँ पे सर्जन्स और डॉक्टर्स को अगर ये क्लैरिटी नहीं है कि मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो अ पार्ट, बिकॉज सी, इफ आई लुक एट माई बॉडी और इफ यू लुक एट योर बॉडी, हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, इट्स नॉट अ सेपरेट एंटिटी, it's a part, right? Part of It's the a part. body, right? Okay. So if I'm feeling some pain in my hand, I'll go to my doctor कि डॉक्टर मुझे हाथ में दर्द हो रहा है, एंड अच्छा, डॉक्टर वुड टेक एंड डू द नीडफुल. तो okay. अगर मेरे दिमाग में दिन रात थॉट्स चल रहे हैं, अच्छे बुरे हर टाइप के, इधर उधर मेरे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, मेरा बिजनेस हो सकता है कभी अप है कभी डाउन है, कभी मेरे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो डोंट यू थिंक कि वहां पे भी कुछ चीजें फिक्स करने की जरूरत है? Exactly. बट नहीं, nobody even talks about it. So yeah, इनफैक्ट that's a big. पुनीता, मैंने ये देखा हुआ है कि मतलब अगर आप होलिस्टिक वेलनेस का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इंडिया में मिसिंग है. Yeah. जबकि सारी most of the developed countries, they recognize the importance of, for example, I'm deviating a little bit from the topic. For example, doctors in India, they don't understand the importance of, matlab, I would not blame it. I'm not saying all the doctors, but there are few people who would not understand, underestimate the power of good lifestyle, underestimate the power of healthy eating habits, underestimate the power of exercising. Same way goes in mental health practitioners also. They don't recognize the benefits of therapy. Though we have started a little bit, but there are people in the health industry who don't understand the importance of holistic wellness, which is, I have seen myself, is there in the developing countries, that they have a concept of holistic wellness where they will suggest you each and everything to get yourself healed at a point कि यार आप सब तरीके से आप mentally stable feel कर रहे हो, right? ये तो this is something which is missing, and seriously मतलब it is a cause of concern, right? Yeah, it is, because see, so many diseases around us. It is because of mental health issues. You talk about any disease, and I can give you a reason for it. And just to give you some insight, I have helped people come out of their migraine. I have helped people come out of their skin issues. Skin issues तो मैंने खुद के ऊपर work किया है पहले, because it is all because of emotional imbalance. I have helped people come out of back pain, because back pain is considered because of the financial stress if people have. हर एक डिजीज का ना एक इमोशनल रीजन होता है, हाँ, एंड नोबडी टॉक्स अबाउट इट. वो हिट करता है आई थिंक कोई पर्टिकुलर ऑर्गन पे या किसी कहीं जाके, तो आपका स्ट्रेस विल शो यू इफेक्ट्स इन द फिजिकल फॉर्म एज वेल, राइट? राइट, राइट. So, like, can you provide some practical tips for the listeners to maintain good mental health? राइट. सो आई थिंक सेल्फ केयर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. लाइक यू ऑल्सो मेंशन गुड ईटिंग हैबिट्स एंड कीपिंग आवर हेल्दी लाइफस्टाइल. सो आई वुड स्टार्ट विद सेल्फ केयर. अब जब मैं सेल्फ केयर की बात कर रही हूँ ना, तो सेल्फ केयर considers a lot of things. It is about what do you say to yourself when you wake up in the morning. Okay, how you look at yourself into the mirror and talk to yourself. Because see, I am the one जो खुद को confidence दे रहा है, जो खुद को हील कर रहा है. सो इफ आई कांट लुक इनटू द मिरर एंड टॉक टू माई सेल्फ विद कॉन्फिडेंस, आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू वर्क फॉर मी. देन ऑफ कोर्स अ गुड फूड, हेल्दी फूड, क्योंकि जो मैं अपनी बॉडी को फीड करने वाली हूँ ना, मेरा माइंड उसी हिसाब से वर्क करने वाला है. सो इफ आई फीड माई बॉडी विद जंक, my mind is going to think junk. So it's always good to have healthy food. Then of course working out, whatever form of exercise you think is good for you. अब उसका एक रीजन है. जब आप एक्सरसाइज करते हो ना, तो आपकी बॉडी एक्टिव रहती है.
जब आपकी बॉडी एक्टिव रहती है ना, तो इट एक्चुअली इज गेटिंग रिड ऑफ सो मेनी स्ट्रेस हार्मोन्स. और वहीं अगर आप अपनी बॉडी को मूव नहीं कर रहे हो, बिठा के रख रहे हो एंड नॉट रियली डूइंग एनीथिंग, यू आर एक्यूमुलेटिंग सो मेनी थिंग्स इन योर बॉडी इंक्लूडिंग स्ट्रेस, जो आपकी बॉडी को जरूरत नहीं है. सो व्हेन यू मूव योर बॉडी, यू आर एक्टिव, जिस भी फॉर्म में, जो भी एक्सरसाइज आपको सूट करती है, it gives a lot of relief, and it gives a lot of care to your body. It's more of a self healing. Self care के अलावा I would say that addressing your own emotions. अगर मेरे को अभी अच्छा नहीं लग रहा है because of XYZ reason, it is good that I sit with myself and I find a solution to it. कभी कभी ना हम लोग इग्नोर कर देते हैं, हमें लगता है छोड़ना, इट्स टफ, इट्स डिफिकल्ट टू एड्रेस. इससे अच्छा मैं बाहर चली जाती हूँ ना पार्टी में, और थोड़ा सा अपने आप को डी स्ट्रेस कर लेती हूँ. सी, डी स्ट्रेस करना इज गुड, गोइंग आउट इट्स गुड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दैट आई वुड बी सप्रेसिंग माई इमोशंस. प्रॉब्लम तब आती है जब आप सप्रेस करते हो, और जब आप इतना हद तक सप्रेस करते हो, then one day it is going to come out in form of multiple diseases. You talk about any cancer, you talk about any tumor. I mean, I'm not saying all these words to scare somebody, but see, this is something which is a fact. आप किसी भी ट्यूमर की बात करो, कैंसर की बात करो, आपके किसी भी बॉडी ऑर्गन में कुछ भी प्रॉब्लम है, इट इज बिकॉज ऑफ सम सप्रेस्ड इमोशन, जो इतना ज्यादा सप्रेस हुआ है ना बहुत टाइम से, कि अब वो निकलना चाह रहा है. बिकॉज वन ऑफ द प्राइम डायरेक्टिव्स ऑफ आवर सबकॉन्शियस सेज कि अगर आपने कुछ सप्रेस किया है ना बॉडी में, तो कभी तो निकलेगा. अब अगर आप उसको नॉर्मली रिलीज कर रहे हो, किसी से बात करके, थेरेपी लेके, एंड अपने आप को कूल करके, काम डाउन करके, तो अच्छा है. इफ नॉट, देन इट इज गोइंग टू कम आउट इन द फॉर्म ऑफ कैंसर्स एंड ट्यूमर्स. सो चॉइस इज योर्स. अनदर थिंग इज टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ. पता है, एक छोटी सी चीज है, हमें बचपन में ना कभी नो बोलना नहीं सिखाया जाता. एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि एडल्ट्स को ना नो बोलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है. It's difficult for them to say no to people. Jabki they can be straightforward. I'm not saying be blunt or rude. No. I'm just saying, why don't you set some boundaries and prioritize myself? So, example, if somebody is giving me a task, और मैं शायद उस स्टेट में ही नहीं हूं कि मैं वो टास्क कर सकूं, so can't I say no to this person? That's, I'm not in the right state right now. Maybe मैं इसको बाद में कर लूंगी, right? एंड यू कैन गिव मी सम अदर टाइम. लेकिन नहीं, हमारे सोसाइटी में एक नॉर्म है ना कि लोग क्या कहेंगे, कोई बुरा तो नहीं मान जाएगा. आई थिंक दिस इज समथिंग जो कि बहुत छोटी चीज है, लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है. सो वी शुड लर्न कि हमें अपने फ्रेंड्स के साथ में कैसे बाउंड्रीज क्रिएट करनी है अगर रिक्वायर्ड है तो. लाइक आई हैव लॉस्ट अ कपल ऑफ फ्रेंड्स because they never understood my boundaries and I had to lose them. ऐसा नहीं है मुझे अच्छा लग रहा है वो करके, but I know कि priority is my mental health, because that is going to keep me safe for a very long term, right? So I had to let go of that energy जो मेरे लिए काम नहीं कर रही है, right? And last thing here I would say is that while taking care of yourself, while prioritizing yourself, you should be able to understand कि what is my goal looking forward. So a lot of mental health issues are because of a reason that I don't have something to look forward to. अगर मेरी लाइफ में आज कुछ है ना सामने देखने के लिए, वो दिस इज माई गोल, दिस इज माई पर्पस, दिस इज माई विजन, आई थिंक मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ना वहां सॉल्व होने लग जाएंगी, बिकॉज आई हैव समथिंग इम्पोर्टेंट टू लुक फॉरवर्ड टू. सो आई थिंक दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू सजेस्ट. I think setting boundaries and prioritizing yourself is very important. And सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग is something we should avoid. You know, like Punita, I would like to ask you, what are the like typical signs and symptoms where we should consider looking out for a for therapy? Okay. And also, what are the signs and symptoms should family members or friends around you should be, like they should be aware of while, like if they are seeing someone, कुछ ऐसा, what, कुछ तो signs or symptoms होते होंगे for depression, anxiety, which you can see in other person. And, when should we exactly consider reaching out a therapist?
Okay. So I'll tell you पहले individual perspective से, then I'll tell you from the other people's Other perspective. person. Yeah, exactly. So अभी individual perspective से देखूँ ना, so being an individual, if I feel that there are certain problems going on in my life, मैं कितनी भी कोशिश कर रही हूँ लेकिन मैं उसका solution निकाल नहीं पा रही हूँ, और अगर टेम्परेली मैं सोल्यूशन निकाल भी रही हूँ ना, तो कल को वो चीज मेरे सर पे वापस आ जा रही है. एग्जाम्पल, सपोज देयर इज अ चाइल्ड एंड उसको बहुत ज्यादा पेयर प्रेशर है, a lot of people are around him कि यार तुमको अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, you have to study and you have to get good marks. Now this child is trying, this child is consistently studying and taking care of everything, still he is not able to score well. है. अब अगर उसको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा पैनिक कर रहा है, और हो सकता है वो पैनिक ऐसा कर रहा है दैट ही इज नॉट एबल टू इवन टॉक टू द पेरेंट्स, क्योंकि उसको लगेगा कि पेरेंट्स आर गोइंग टू स्क्रीम एट मी, शाउट एट मी. तो उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, राइट, और वो सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहा है. अगर वो इसी साइकिल में फंसा रहेगा ना, देन टुमारो दिस कैन बी अ वर्स सिचुएशन फॉर हिम, क्योंकि हो सकता है वो डिप्रेशन में चला जाए एंड थिंग्स कैन गो वर्स एज वेल. एंड यू नो दिस इज समथिंग विच स्केयर्स मी अ लॉट. अभी ये कोर्ट वाले केसेस आपने बहुत ज्यादा सुने होंगे फॉर लास्ट few months, you know, so many things happening, and I have got an opportunity to even talk to a few people there because when I saw it in the news I was scared. I'm still getting goosebumps when I'm talking about it. वो इसलिए हो रहा है because individually I am not able to understand कि मैं इसका solution नहीं निकाल पा रहा हूँ या नहीं निकाल पा रही हूँ, और मैं खुद को ही ब्लेम कर रही हूँ कि मैं ये क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मैं इसका सोल्यूशन क्यों नहीं निकाल पा रही हूँ. सो आई थिंक ये सिचुएशन में ना, सबसे पहले यू नीड टू बी इजी ऑन योर सेल्फ. अपने आप को ब्लेम मत करो हर चीज के लिए. रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, अपने आप को हर चीज के लिए ब्लेम करने की जरूरत नहीं है. यू कैन लुक आउट फॉर समबडी जिससे आप बात कर सको. इट कुड बी अ कोच, इट कुड बी अ थेरेपिस्ट. अभी कोच क्या होता है ना, लाइक इफ आई एम अ कोच, सो मैं आपको ये सजेशन नहीं दूंगी कि यू नो व्हाट आपको ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, नहीं. मैं आपकी सिचुएशन समझूंगी एंड मैं आपसे ही आंसर्स एलिसिट करवाऊंगी. बिकॉज अगर मैं आपसे आंसर्स एलिसिट करवाऊंगी ना, तो रियलिस्टिक आंसर्स होंगे. सो कोचेज आर नॉट मोटिवेशनल स्पीकर्स. हाँ, ये मिथ है अगेन मार्केट में कि अगर कोई कोच है ना तो ये तो बहुत अच्छा बोलता होगा, सजेशन देता होगा, एडवाइस देता होगा. नहीं. being a coach, you are never supposed to advise somebody from your model of the world, क्योंकि आपके लिए जो काम करेगा जरूरी नहीं है सामने वाले के लिए भी काम करे. सो आपका जो वर्क है ना, वो है सामने वाले से ही solutions निकलवाना. सो मे बी इफ आई हैव टू समराइज दिस एट एन इंडिविजुअल लेवल, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कब मैं अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहा हूँ, या मेरी प्रॉब्लम्स मुझे इतना बॉदर कर रही हैं कि ना मैं ढंग से खा पा रहा हूँ, ना सो पा रहा हूँ. या हो सकता है कि मैं सोशली जब इन्वॉल्व भी हूं ना, तो भी मैं इंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ मूवमेंट को. तो अगर आप इस मूवमेंट को इंजॉय नहीं कर पा रहे हो, आप माइंडफुल नहीं हो, आप सोल्यूशंस नहीं निकाल पा रहे हो, आई थिंक यू शुड गो आउट एंड उसको बड़ा मत होने दो. अगेन दिस इज अनदर थिंग कि लोग सोचते हैं अभी तो इतना सा है ना, लेट इट बी बिग, लेट इट गो. तो ये बिल्कुल वही चीज हो गई कि आपके हाथ में या पैर में कुछ लग गई है चोट, और आप सोच रहे हो छोड़ो ना उसको, आप हील हो जाने देंगे, लेट्स नॉट गो टू द डॉक्टर. एंड कभी हील हो भी जाता है, कभी नहीं भी होता है. अब से सपोज वो हील नहीं हुआ और वो इतना बड़ा बन गया कि डॉक्टर ने आपको बोला कि अरे आपको पहले आना चाहिए था. तो सेम चीज मेंटल हेल्थ के लिए भी होती है कि व्हाई डू वी वेट फॉर इट. नाउ if I look at it from a third perspective, suppose मैं किसी Like to uh, interrupt here, I have also read, like I've also, listened in a lot of podcasts and talk shows. There is a feeling of numbness, so you don't feel anything, and conscious level भी कम हो जाती है. So is it like something that you see in a lot of people? I do, but that is the worst case scenario wherein depression आ चुका है. You know, Okay. when you are, see, there are stages. So right now if things are not working for me, I won't call it depression. Depression होता है जब आपकी बॉडी में changes आने लगते हैं, like your body starts feeling numb, और you don't गेट फीलिंग ऑफ हैविंग फूड. यू नो, भूख लगनी बंद हो जाती है, एंड आपके आसपास लोग आपको बोल रहे हैं अरे तूने सुबह से खाया नहीं है, एंड यू आर लाइक अच्छा, रात हो गई मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं, बट मुझे भूख ही नहीं लग रही है.
So that's what depression gets into, takes into, right? And I think that is a scenario जो एकदम आगे जाके उस लेवल पे आता है जब आपने उसको स्टार्टिंग में एड्रेस नहीं किया. But most of the people, I have seen a lot of people जो काफी progressive stage पे जाके then they start therapy and the treatment. So the sad part is we don't recognize at the earlier stage, and then it goes very severe, and then people go to therapist or you can say doctors for that matter. So I'll give you a fact here. Everybody needs a coach. Yeah. Every and even a coach needs a coach. सो Okay. ऐसा नहीं कि मैं कोच हूं तो मतलब मैं एकदम भगवान बन गई हूँ, मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम्स No. नहीं आएंगी. नथिंग लाइक दैट, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर इमोशनल बीइंग्स एंड वी गो थ्रू चैलेंजेस, अप्स एंड Okay. डाउन. सो एवरीबडी नीड्स अ कोच. नाउ अगर मैं आपको एकदम आइडियल सिनेरियो बताऊं ना, तो आइडियल सिनेरियो तो ये होना चाहिए दैट यू शुड टॉक टू योर कोच एटलीस्ट वंस इन अ वीक. एंड आई डू हैव क्लाइंट्स who are in regular touch with me, and I do keep a check on them, and they would be with me once in a week or maybe twice in a week. ऐसा नहीं है कि they would only come जब कोई सिनारियो बड़ा हो गया है, नहीं. But I am their coach till I am there with them and they are there with me. And every week we get in touch, we go for a session so that they can share whatever is happening. And if there is a challenge, something is bothering them, then we can work around it and find a solution. So ideal situation to ye hona chahiye. But still, again, in India, as you mentioned, there's a long way to go. I'm happy that there are a lot of countries jahan pe ye cheeze recognized hai, and not just here and there. In fact, there is one organization, for privacy reasons I can't share their name, but then this is an organization jahan pe I'm a regular coach. When I say Okay. regular coach, as in I talk to their employees one on one every single month. Like Okay. हर महीने Yeah. I'm talking to their employees. So I think this is the ideal situation that has to be there, which we started. वेस्टर्न कंट्रीज में देयर इज ये बहुत कॉन्सेप्ट है कोचेस का. So Hmm. I think you need someone who can look at it from a broader perspective for you, because when you are in a situation आप उसको एक बहुत छोटे पर्सपेक्टिव से देखते हो. But when Right. someone else is looking out at a situation, who is educated enough to coach you, so I think there can be nothing best than that. So I think it's a really good concept to have a coach. एंड स्पेशली मतलब अभी इतने लोग आई थिंक कोचेस लें इंडिया में, उसके लिए तो काफी टाइम है. बट देन if you are if you are facing some issues like this, so you should definitely go to a therapist or a coach or an emotional intelligence coach or something like that, right? Right. And apart from the individual perspective, like we were talking about, कि family members कैसे identify करें. हाँ. So first is communication is the key, right? So if you have people around you, suppose I am the one who is facing challenges. मेरे आसपास लोग हैं, maybe my parents and my family members. They need to be wise enough to see कि मेरे communication में changes आए हैं क्या. जैसे मैं Okay. उनसे पहले बात कर रही थी, क्या अभी भी मैं वैसे ही कर रही हूँ, या फिर देर आर सम चेंजेस. अनदर थिंग इज, क्या मैं बहुत ज्यादा अकेले टाइम स्पेंड कर रही हूँ क्या. सी, देर आर टू वेज ऑफ लुकिंग एट इट. वन इज व्हेन यू आर अलोन, you can be in solitude, you are content, and second is you are lonely. So am I spending a lot of time being lonely? Am I sleeping a lot? अच्छा, जब डिप्रेशन होता है ना या फिर स्ट्रेस होता है तो बहुत ज्यादा नींद आती है. सो द Okay. पीपल हु आर इन डिप्रेशन, वो बहुत ज्यादा आपको दिखेगा कि वो सोने लगेंगे. वो उनको घर का खाना इतना अच्छा नहीं लगेगा, वो बाहर जाके जंक खाने लगेंगे. ये भी एक सिम्टम होता है, राइट. उनकी स्लीप साइकिल बिगड़ जाएगी, मतलब वो कभी भी सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं. ऐसा पहले जैसा रूटीन नहीं रहेगा. उनका मन नहीं करेगा कुछ भी काम करने का. सो इफ दे आर किड्स, उनका पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा. इफ दे आर एडल्ट्स, उनका ऑफिस जाने का मन नहीं करेगा, बिजनेस का मन नहीं करेगा, राइट. So being the people around us, they should be aware, they should be observant कि क्या ये सब changes आ रहे हैं क्या lifestyle में. If yes, then maybe they can talk to this person. Is everything okay? Is everything fine? अब again दूसरा problem कि जब हमसे कोई पूछता है how are you, हम हमेशा बोलते हैं oh I'm good, I'm fine. बहुत कम Honest से about how we are feeling. है.
बहुत बहुत कम सिनेरियो होता है जहाँ पे आप बोलते हो आई एम लाइक नॉट सो ग्रेट टुडे, आई एम नॉट सो गुड टुडे। आई थिंक ये सिर्फ हम अपने आसपास जो अपने फ्रेंड्स हैं शायद उनको बोल पाते हैं। कभी कभी तो उनको भी नहीं बोल पाते हैं, ये सोच के कि ये मजाक उड़ाएगा, ये क्या बोलेगा, राइट। सो आई थिंक आप बीइंग पेरेंट्स या फिर बीइंग द फैमिली मेंबर्स और द फ्रेंड्स ऑफ दिस पर्सन, आप उसकी बातों पे, उसके वर्ड्स पे मत जाओ, क्योंकि वो हैबिचुअल है। वो क्या है ना, हमें बचपन से सिखाया गया है। इज इफ एवरी इज इफ एनीबडी इज आस्किंग हाउ आर यू, आप बोलोगे आई एम फाइन, आई एम गुड, राइट। तो आप उनके वर्ड्स पे मत जाओ, आप लिटरली उनसे कॉन्वर्जेशन करो और देखो कि क्या सच में सब कुछ ठीक है या नहीं है। और अगर नहीं है ना, तो उसको ये मत शो करवाओ कि तेरे साथ कोई बहुत बड़ा चैलेंज है या कुछ हो रहा है। यू सिंपली से कि अच्छा लेट अस गो एंड मीट somebody नो हु कैन हेल्प अस, इट कुड बी अ थेरेपिस्ट, इट कुड बी अ कोच, एंड सो बात करके देखते हैं ना, लेट्स सी हाउ इट गोज। सो हम्म, ऐसे इसको बहुत इजी वे में लेकर जाना चाहिए, ना कि उसका एक स्टिग्मा बनाना कि अरे कुछ हो गया है और सब कुछ ठीक है ना। आई थिंक these negative talks also put people into a lot of stress and anxiety, कि इतने सारे लोग फालतू की जो बातें कर रहे हैं ना कि अरे मुझे कुछ हो गया है क्या, मुझे स्ट्रेस है क्या। स्ट्रेस, ट्रस्ट मी, कोई आउट ऑफ द ब्लू सिचुएशन नहीं है। वी ऑल गो थ्रू स्ट्रेस, स्ट्रेस समटाइम और दी अदर, किसी के लिए कम होता है, किसी के लिए ज्यादा होता है। तो वो कोई हम्म। बहुत बड़ा ऐसा स्टिग्मा नहीं है, इट्स नॉट समथिंग कि कुछ बुरा होने वाला है या बुरा हो गया है। अगर आपको स्ट्रेस है तो यू कैन टॉक अबाउट इट एंड यू कैन गो टू द राइट पर्सन। सो या। So, Krita, what are the resources that you recommend for people seeking mental health support? Okay, first is the kind of content you are consuming. Okay. आजकल ये जो मीडिया और एंटरटेनमेंट है हमारे पास में इतना इजीली एक्सेसिबल है, हम सबके पास में इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, आर्टिकल्स हैं, ब्लॉग्स है। जैसा कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं ना, आई थिंक हमारा जो मेंटल सिचुएशन है वो धीरे धीरे वैसा ही बनता जाता है। इफ यू आर लिसनिंग टू सॉन्ग्स और इफ यू आर वॉचिंग मूवीज जो बहुत ज्यादा सैड मूवीज हैं, कंटेंट ऐसा देख रहे हो जो आपको बहुत ज्यादा अनवांटेड इमोशंस दे रहे हैं, सो आई थिंक दैट इज समथिंग यू नीड टू कट फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड यू शुड स्टार्ट कंज्यूमिंग द कंटेंट दैट इज गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। आपके जो बहुत सारे बिलीव्स और जो वैल्यूज है ना, वो आपके आसपास से बन रहे हैं, आपके एनवायरमेंट से बन रहे हैं, राइट। लाइक यू हैव सर्टेन वैल्यूज जो आपने इनहेरिट किया है फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रॉम योर फैमिली मेंबर्स। बट आई थिंक एज वी ग्रो अप इट्स ऑन अस कि मुझे कैसे वैल्यूज चाहिए, मुझे कैसे बिलीव्स चाहिए, राइट। एंड फॉर दैट यू नीड टू बी इन द राइट स्टेट ऑफ कंज्यूमिंग द राइट कंटेंट। सेकेंड, आपका जो सर्किल है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। द काइंड ऑफ फ्रेंड्स यू आर हैविंग, द काइंड ऑफ पीपल यू आर टॉकिंग टू। इफ यू फील कि कुछ टॉक्सिसिटी है आपके आसपास, देन यू कैन फिगर आउट अ वे टू ओवरकम इट, गेट rid of it. Another thing is you need to maybe read or maybe have wisdom and knowledge about these things, and it could be easily accessible through books. There are a lot of books available in the market जो आपको बताते हैं कि what is mental health and how you can take care of yourself. उसके अलावा आप जर्नलिंग कर सकते हो। लाइक जर्नलिंग इज वेरी नाइस थिंग टू डू। जर्नलिंग कैसे है कि हर दिन रात को बिफोर आई स्लीप आई टेक अ पेन एंड अ पेपर एंड आई राइट अबाउट माई डे, कि मेरा दिन कैसा था, राइट। मैंने कौन कौन से इमोशंस फील किए, वेदर गुड वेदर बैड। जब मैं सारी चीजें लिखूंगी ना, तो मुझे सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज्यादा होगा। मुझे पता चलेगा कि अच्छा दिस इज समथिंग विच डिडंट गो राइट टुडे इन माय डे, तो मैं क्या कर सकती हूँ सो दैट टुमारो इज बेटर, राइट। एंड यस, द लास्ट एंड द मोस्ट important thing is if you can have a coach of your own, that is the best thing. Even I have a coach, Okay. I'm saying, no, even coaches need coaches. तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं एकदम कोच हूँ सबको, अगर मैं थेरेपीज प्रोवाइड कर रही हूँ तो आई एम ऑलवेज 100% फाइन, नहीं। इवन आई गो थ्रू चैलेंजेस एंड इवन यू नीड अ कोच। So I think all these resources are going to be helpful. In fact, also in Indian culture, काफी हमारे ancestors भी कहते हैं it's very important to have a guru. So to have a guru or to have a coach is very important for a healthy individual. And when it comes to challenges like this, go to a therapist. So, Right. Preetham, lastly, what is your perspective on the role of like botanical extracts in mental health challenges? Like, what do you feel about it? See, we have seen, like I mentioned earlier also, what you are consuming
that's what you are giving to your mind, right? अगर मैं अच्छा कुछ consume कर रही हूँ तो मैं अच्छा thought process और perspective दे रही हूँ मेरे mind को. So even the science says that there are so many things like ashwagandha, if you talk about. There is like green tea extract, if you talk about, and there are other things which added as a supplement to your food. In fact, बहुत सारी medicines में भी ये सब use होता है. Forget about supplements. I think a lot of medicines even all use all these things. तो उसका reason ये है that it is somewhere healing us. It is giving the required assistance to our body food के साथ में, so that our body is getting healed and we are getting the right kind of mental state and emotional balance. So I think it plays a very important role, and this is not something जो कि सिर्फ एक इंडिविजुअल ने फील किया है. If you look into the case studies, I think a lot of people were able to take care of their mental health just with the help of these extracts and supplements. Yeah. So, Punita, as you mentioned, that botanical extracts are like also a lot of people are using in their practice. So, as you mentioned about ashwagandha, so we also have a supplement in Core Life named Renewo, and it is to support healthy aging and to manage daily stress. So, we have this like a patented formula. It has ashwagandha, it has black pepper extract, and this is like a supplement which is well researched, and it is proved that it reduces the stress marker, which is TNF alpha, in presence of a high fat or a high sugar diet, or if you have a very unhealthy lifestyle, it will try to manage your stress. So, of course, a holistic approach is needed with good lifestyle, good diet, and a lot of other things. But supplements are also equally important. So, as you mentioned, ginkgo biloba, we have a supplement called as Recall, which is a brain health formula for targeted for your brain health, and it contains magnesium, it contains ginkgo biloba, it contains rosemary leaf extract and other antioxidants and other nutrients to support your brain health, to support your mental acuity, your sharpness, your cognition, as well as memory. So, apart from this, additionally, like therapy, a good lifestyle, and everything is needed when if you have a particular condition. And also, we do not. It is very important to understand that these products are not designed to diagnose, treat, cure, or prevent a disease. These are just like supportive products for for individuals who are seeking support for their brain health or for your overall wellness. This can be taken by healthy individuals as well. In fact, we all being healthy also, we are consuming these supplements. Right. Makes sense. And in fact, even if you go for your body checkup, and sometimes if you think that there is something missing in your body, it could be vitamin D, or B12 or something. So it is good to have these supplements which would help you to regain whatever is missing in your body, right? And we have seen, there are so many things like magnesium, zinc, which is really important for our bodies. So yeah, it makes a lot of difference. Yes, definitely. So there are a lot of studies which say that vitamin D or extreme low levels of B12, they also affect your brain health and your overall health. For example, then also zinc deficiency is also linked to your brain health. Apart from this, if you're taking good amount of omega fatty acids in your diet via supplements or via diet, so it is really good for the brain health. So again, as you mentioned about nutrients, so we also have an essential fatty acid complex which contains omega-3 and omega-6 in perfect combination to support your overall health, and a lot of researches prove that they're also very good for the brain function and can improve your cognition. Apart from this, we also have a targeted product, as I told you, Recall, which is there for the brain health, and we have vitamin and mineral complex as well, which has all the nutrients to support your overall well-being and also your mental health. So, what happens is, Punita, when you're continuously, constantly consuming as a healthy individual, also if you're meeting your micronutrient needs on a daily basis, you will not fall off on that severe deficiency level wherein you start, having symptoms which affect your brain also. Because a lot of nutrients like B12, zinc, magnesium are related to your brain health. So it is very important that we take care of our overall health with diet, exercise, as well as this thing, supplements. So
What do you think, like, is what is, like, your perspective on holistic health when it comes to supplements, diet, and exercise together? So, we all talk about having a balance, and I think this is something that I always talk about, having a balance in our life. You can't only be relying on one area. So, let's say if people say, okay, our physical health is important. So, at the same time, your mental health is also equally important because your mental health is giving your body some strength. Who is moving your body? It is your mind that is moving your body, right? It is your mind that is giving instructions to your body, as simple as that. How your body is working, it is working because you have some emotions. You can't take out emotions from a human body. Emotions हमेशा है, हर moment है. So if I'm not able to take care of my emotional well-being, again something is missing. So when I talk about a balance, it is a balance of my physical health, my emotional well-being, my mental health, so that I have a holistic approach towards it. And that's how I can call myself a healthy individual. सिर्फ एक चीज is not going to make me healthy. I think it's an overall approach. And trust me, श्वेता, इतना difficult भी नहीं है. जब हम नहीं करते हैं तो लगता है डिफिकल्ट, पर ट्रस्ट मी इतना डिफिकल्ट नहीं है जब एक हैबिट बन जाती है, रूटीन बन जाती है. लाइक इफ आई नो कि हर दिन मेरे लिए मेरी मेंटल हेल्थ, मेरा इमोशनल वेलबींग और मेरा फिजिकल हेल्थ, तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, तो ऑफ कोर्स मेरा रूटीन अगर मैं वैसा ही बनाऊंगी, इट वुड बिकम वेरी इजी फॉर मी. हैविंग गुड स्लीप, good exercise, good food, right? Listening or consuming the content that is good for my mental health. Having a coach जिससे मैं बात कर सकती हूँ, right? जिसको मैं share कर सकती हूँ चीजें, and I can fast track my performance into work as well. When I fast track my performance into work, तो any which ways मेरा emotional well-being और ज्यादा अच्छा होगा. If I'm facing certain challenges, uh, I address those challenges and find ways to overcome it. And I do take care of my physical health as well. So I think overall, अगर ये सारी चीजें हैं, healthy lifestyle, it's gonna give an individual what he or she wants. So I think it's like a takeaway message for everyone that you should have a holistic approach when it comes to your mental health, because your mental health and physical health all are interrelated. And that's it for today's talk show. Thank you very much, Punita, for coming on this talk show, for this such a enlightening talk show that we did today. And thank you to all my viewers for tuning in. Thanks to you too, Shweta. And I really appreciate you for taking this initiative because trust me, this is really important. And people like you who are taking this initiative so that, people can understand the importance of mental health. Kudos to you for that. And it's always a pleasure to talk to you and, come on this show. Thank you so much. Thank you very much, Punita. So, to all my viewers, remember it's very important. Just like taking care of our mental health is as important as taking care of your physical health. Let's keep the conversation going and continue to raise awareness and support mental health. Thank you very much for having me today. Bye bye, everyone. Have a nice day.